Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyuja Deshitarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Apki tabiat? Oh, I must sing, is it? Oh, I must sing. All right. Can I have a khatam for my heart? Apki tabiat kaisi hai? Kemcho? Gujarati? Apni Kavanachan, Balavachan, Cholchan, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyuja Deshitarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Vanchakaptarubhyascha kripa sindhu vyevacha Patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Well, I am very happy to be here with you all again. मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ फिर वापस आया हुआ। Yeah, and it's such an auspicious and wonderful time of the year. इतना शुभ अवसर है इस साल में। And of course we remember the pastime of Lord Krishna with Mother Yashoda. जिस समय हम माता यशोदा के साथ भगवान का ये लीला स्मरण करते हैं that Mother Yashoda was breastfeeding little Krishna. यशोदा मैया स्तन्यपान कर रही थी भगवान को And simultaneously she was churning the yogurt into butter. और उसी समय मंथन कर रही थी This is multitasking. अनेक काम एक साथ में कर रही है So yes, she was doing that, and everything was very nice, and Krishna was very happy. वो जब कर रही थी भगवान भी बहुत खुश थे सब कुछ अच्छा चल रहा था But then suddenly Mother Yashoda noticed that in the kitchen there was a pot of milk which was being heated. It was starting to boil over. तब मैया को याद उनके स्मरण में आया कि दूध जो है उबल रहा है रसोई में And it is not good to spoil or waste milk. दूध व्यर्थ नहीं करने का है अच्छा नहीं Milk is liquid religiosity. वो धर्म लिक्विड रूप में द्रव्य के रूप में आपके लीलाश समझते हैं बोल सकते हैं द्रव्य रूपी धर्म दूध Right. So we don't waste one drop of milk. एक बूंद भी उसको व्यर्थ नहीं करने का So seeing this was happening, Mother Yashoda had to immediately act. तो उसे देखते हुए वो इमीडिएटली चल पड़ी वो उसका ठीक करने के लिए Yeah. So she just put Krishna down भगवान को नीचे रखा and just ran inside, और भागना शुरू किया and she saved the milk. और दूध बचा लिया However, our Krishna, from being breastfed, which is the most secure position for a child, बहुत जो माता जब स्तनपान कर रही है वो बच्चे के लिए सबसे स्थिर और आनंद की स्थिति है he suddenly found he was on the floor. और उसको सडनली अचानक धरती पर रख दिया And he's looking up and seeing the sky.
और वो आकाश को देख रहे हैं नीचे से। Oh, and Krishna was not happy about that. भगवान अवश्य खुश नहीं थे इस विषय पर। What does she think she is doing? क्या सोच रही है, क्या कर रही है वो? So Krishna became transcendentally very upset. तो भगवान बहुत अपसेट हो गए, दिव्य रूप से। Upset हो गया। भगवान नाराज हो गए। बहुत upset, hey. So anyway, and he thought that I will teach her a lesson. मैं माता को आज सबक सिखाऊंगा। You don't treat me like that. मेरे से ऐसे व्यवहार करती है, उसको सबक सिखाऊंगा। So there was this pot, clay pot, in which she was churning the yogurt into butter. जिस मटकी में वो दही मंथन कर रही थी, And Krishna took one rock and he smashed a hole in that pot. एक पत्थर लिया और बड़ा छेद बनाया उसमें, मार के। And it was, maybe it was 20 liters. It's a fairly big pot. अब 20 लीटर का बड़ा बर्तन था। And she was in the middle of doing this. और वो भी काम अधूरा था, आधा हो रहा था। So what came out was half-formed butter and sort of half milk and half buttermilk. तो उसमें से जो निकला, वो मारने मटकी से जो आधा मक्खन था, आधा सिर्फ छाछ था, सब निकल आया उसमें से। Yes. And it all came pouring out, maybe 20 liters, and what a mess. वो 20 लीटर आके पूरा रसोई घर, पूरा जगह पूरा नाश खराब हो गया। So Krishna felt good. भगवान को अच्छा लगा, हाँ अभी मैंने उसको सिखाया। Better. But still he felt, I must do more and teach her an even better lesson. तो उन्होंने सोचा और भी सिखाऊंगा उसको, देखो क्या है। So he managed to climb up to the ceiling. तो फिर छत पे चढ़ गया, छत के पास। Chat ke paas. And from the ceiling was hanging some clay pots with butter and different other dairy products in them. तो छत से लटका हुआ और भी मटकी थे, जिसमें ऐसे बहुत अन्य द्रव्य थे। And Krishna smashed holes in them. और उन सब का भी छेद किया पत्थर लेके। So out came all this butter and milk and cream and yogurt. तो दही, मक्खन, दूध सबका बरसात हो रही थी उस जगह पर। Oh, what a mess! पूरा जगह पानी, माखन और दूध से लगभग छाछ से। It is a housewife's nightmare. एक गृहिणी का ऐसे परिस्थिति सबसे बुरा परिस्थिति है। And then some of this butter which had fallen, Krishna started eating it. और जो गिरा हुआ माखन है वो भगवान खाना शुरू किया। And he ate so much. इतना खाया भगवान ने, He couldn't eat more. इससे ज्यादा कुछ खा नहीं सके। And the monkeys came और बंदर जब आए and he started feeding the monkeys. तो उनको देना शुरू किया माखन। And the monkeys were eating and eating the butter. तो मक्खन आनंद से बंदर खा रहे। Oh. And Mother Yashoda came. और मैया यशोदा उधर आई। He had given the monkeys so much they could not eat more. उन्होंने इतना माखन दिया बंदरों को, वो खा नहीं पाए इसके ऊपर। So Krishna's offering the butter to the monkeys. तो भगवान जब मैया ने देखा भगवान दे रहे हैं माखन बंदरों को। Hey, come. But they had eaten so much, now they're refusing. तो अभी बंदर मना कर रहे हैं भगवान को, अभी हम खा नहीं सकते, बहुत हो गया अभी। Very unusual for a monkey. बंदरों का ये ऐसे व्यवहार नहीं होता, जितना भी दिया ले लेते हैं। And Mother Yashoda saw this. मैया ने देख लिया ये।
And Krishna, he's still feeling angry with Mother Yashoda. तो अभी भी भगवान को गुस्सा था, भगवान क्रोध था मैया के ऊपर. So he wanted to, we would say, to get at her. तो उस पर कुछ और ज्यादती करना था, कुछ और disturb her. मैया को परेशान करना था भगवान को. और So he turned to Mother Yashoda और मैया के ओर देखा and said, "Look at this. और उन्होंने बोला, देखो क्या किया मैंने. Your butter is so bad. आपने जो बनाया मक्खन जो है इतना बुरा है. Even the monkeys will not eat it." बंदर भी नहीं खाते हैं आपका बनाया हुआ. So Mother Yashoda at that point, seeing the mess and seeing the cheekiness of Krishna, she decided, I must teach him a lesson. तो ये पूरा जगह बर्बाद कर दिया और इसके ऊपर ये वचन कोई बोला तो उन्होंने सोचा आज तो सिखाना है इसको. So she grabbed a stick. तो पास में एक छड़ी थी और वो ले लिया हाथ में. And she started chasing Krishna. और भगवान के पीछे शुरू हो गई. And she's telling him, you have gone too far this time. आज तुमने बहुत मस्ती किया ये बार. So I am going to teach you a lesson you will never forget. ऐसे सबक सिखाऊंगी तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा. I will tie you up. बांधने वाली हूँ तुझको. So she chased Krishna. तो भगवान का पीछा किया. But Krishna ran from her. भगवान भागना शुरू किए. And Krishna, he's small boy, he's maybe, I don't know, 3 or 4 years, something like that. 3-4 साल के बच्चे थे. Very agile little boy. छोटे बच्चे तेज भाग सकते थे. Agile? Dodgy, he can dodge. इधर उधर पतली गली पकड़ सकते थे, माथा को नहीं पकड़. And Mother Yashoda, she is not such a young woman. यशोदा उतना कम उम्र की औरत नहीं थी. She's maybe 40 years old, something like this. लगभग 40 साल की थी. Because for many years they did not have a child. उन्हें बहुत सालों के लिए बच्चा नहीं हुआ. The child Krishna only came later. भगवान जो थे बहुत दिन बाद, बहुत साल बाद. So yeah, so she's maybe 40, middle-aged woman. मध्य स्तर के औरत थी, 40 लगभग उम्र. And you know what it's like when ladies reach that sort of age. उस उम्र जब पहुंचते हैं हम सब जानते हैं उनका स्थिति क्या रहता है. Especially if they're good cooks. Especially if they are good cooks. यदि वो बहुत अच्छा रसोई बनाते हैं और भी अच्छी तरह जानते हैं वो लोग को. Sometimes, not always, but sometimes they become a little, heavy in the body. सदैव नहीं, और कभी-कभी थोड़ा बहुत शरीर पर वजन ज्यादा हो जाता है. Hare Krishna. So, and Krishna is very quick, and she couldn't catch Krishna. भगवान बहुत तेजी से भाग रहे थे, वो पकड़ नहीं पाए. So, but she's trying, she will not give up. पर वो भगवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, हार नहीं माना, प्रयत्न कर रही थी. And as she's running and Krishna is dodging, her mood of concern is increasing and increasing. तो वो भगवान भाग रहे इधर उधर करके भाग रहे हैं, तो वो पकड़ने की प्रयास कर रही है, पर उसका चिंता जो है बढ़ता जा रहा है. She's in great anxiety. और बहुत चिंतित है भगवान के बारे में. ये तो लड़का, if I do not teach this child a good lesson, he may grow up bad. इसको अभी मैंने अच्छा सबक नहीं सिखाया, वो तो इसका जिंदगी बर्बाद हो जाए. Oh yes. And now he is stealing the butter. और वो चोरी कर रहा है माखन. But if I do not stop him and train him properly, यदि मैं अभी उसको नहीं रोका और उसको ठीक सबक नहीं सिखाया, in the future he may become big criminal. आगे जाके बिल्कुल बदमाश बन जाएगा.
he may become, now he's just stealing some butter here and there. अभी सिर्फ माखन की चोरी हो रही है. In the future, he may become the head of the makan mafia. आगे जाके माखन माफिया का गुंडा लीडर बन जाएगा. Now he's stealing butter. अभी माखन की चोरी. In the future, he may steal motor cars इसके बाद कार चुराना शुरू करेगा. or buffalo carts, ox carts. या बैलगाड़ी चुराएगा. समझना. And the police will catch him. और पुलिस उसको पकड़ेगी. And they will think, who was the mother of this person? और वो बोलेंगे इसकी माँ कौन थी यार? What sort of useless mother did he have? क्या नालायक औरत थी, कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया. She couldn't bring him up properly. She could not bring him up properly. उसको ठीक तरह उसको पालन नहीं किया माँ ने. And now he's just a big misfit. और अभी वो नालायक है. So Mother Yashoda is very concerned. तो मैया बहुत चिंतित थी. So she's trying and trying, but still she can't catch Krishna. मैया बहुत प्रयास कर रही है पर भगवान को पकड़ नहीं पा रही. And it is not that she is thinking that, it's not that she's simply angry and she wants to beat him or something like that. सिर्फ मैया क्रोधित नहीं थी और भगवान को मारने की वो सिर्फ इच्छा नहीं थी. No, she's concerned for his well-being. पर वास्तविक रूप से उनका भलाई के लिए चिंतित थी मैया. And in her motherly mood, she wants to help him and train him. और उस मातृभाव में भगवान को सहायता करना चाहती है, उनको अच्छी तरह सिखाना चाहती है. So this mood of concern, loving concern for Krishna is increasing and increasing. तो ये प्रेम से भरी हुई जो चिंता है, चिंता से भरी हुई जो प्रेम है भगवान की, वो बढ़ती जा रही है. What would you say? Mataka prem. Prem, motherly love. मातृ प्रेम जो है. Yes. And eventually that motherly, loving concern, it reached such a high level. वो मातृभाव जो है इस स्तर पर जा पहुंचा that it overpowered Krishna. कि वो जो माता का भाव जो है वो भगवान को पकड़ पाया. And she was able to catch Krishna. और वो जाकर भगवान को पकड़ी. Otherwise, to catch God, that's not easy. नहीं तो भगवान को पकड़ना संभव चीज नहीं है. There are so many people, they want to get some mercy from God. इतने लोग हैं जो भगवान से कृपा पाने की प्रयास कर रहे हैं. But how to get that mercy? पर वो कृपा भगवान का कैसे पाए? You cannot demand it. तो वो उसको उससे छीन नहीं सकते. Krishna, give me mercy. हे भगवान मुझे कृपा दो, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते. If you don't give me what I want, I will convert. यदि तुमने मेरा इच्छा जो है पूर्ति नहीं किया तो मैं किसी और मजहब का आदमी बन जाऊंगा. I will become a Christian. मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा. So take that, Krishna. Anyway, okay. Yeah, I might even become a Muslim. हाँ मैं इधर अनेक कुछ और मजहब भी प्राप्त ले सकता हूँ. So you better do what I say, Krishna. तो मैं जो बोल रहा हूँ वो कराओ भगवान. So that's not how to get mercy from Krishna. ऐसे थोड़ी भगवान से कृपा प्राप्त कर सकते हैं. You get mercy from Krishna if you humbly serve him in a mood of love. नम्रता के साथ, प्रेम भाव के साथ यदि भगवान का सेवा करेंगे तो अवश्य भगवान का कृपा प्राप्त होगा. That love is the spice which makes things attractive for Krishna. वो प्रेम जो है वो स्वाद है, जो वो रस है जो भगवान के साथ हमारा रिश्ता को बहुत सुंदर बनाता है. Krishna is not so worried about your chili.
भगवान हम जितना मिर्ची डालते हैं उसके बारे में चिंतित नहीं है in your sabji, सब्जी में in sabji mein, or your adrak, या अदरक जो डालते हैं, and so on. He wants to taste the love. भगवान प्रेम का स्वाद की इच्छुक है. So this is what happened. That Krishna became overpowered by the love of Mother Yashoda, and then he cooperated. तो भगवान प्रेम वश बद्ध हुए और माँ का जो इच्छा था उसका पूर्ति किया. Yes, so then she tried to tie him. तो फिर यशोदा मैया भगवान को बंधने की प्रयास कर रही थी. First of all, one piece of rope like this. एक बड़ा रस्सी लिया हाथ में. Krishna's small boy, his waist is this size maybe. छोटा लड़का है, कमर इतना छोटा है. So rope like this, it's long enough. इतना बड़ा रस्सी तो काफी अवश्य. But it was not long enough. पर उससे संभव नहीं हुआ उसको बांधना. It was 2 fingers too short. तो वो 2 उंगली कम पड़ा. Okay, more rope. ठीक है, कुछ और लाओ रस्सी. 5 meters now. 5 मीटर का रस्सी लेके आओ. It must be enough. अवश्य इससे तो बांध पाएगा उसको. It was 2 fingers too short. वापस 2 उंगली कम. Oh, kya ho raha hai? What's happening? No problem. More rope. कुछ और रस्सी लेके आओ. Problem nahi hai. But you must know, if 5 meters of rope will not get around your stomach, you have been eating too much prasad. अरे भाई 5 मीटर का रस्सी से तेरा पेट बांध नहीं सकती हूँ तो बहुत माखन खाया लगता है. Makan, okay. Well, maybe sabji. सब्जी खाया हो. Yes. So, but it's always 2 fingers too short. तो हर बार 2 उंगली कम पड़ रहा है रस्सी. And more until she had kilometers of rope. आप बहुत अनेक किलोमीटर के रस्सी लेके आए पर भी संभव नहीं हुआ. It's still 2 fingers too short. हर बार 2 उंगली कम पड़ रहा है. How can it be? कैसे हो सकता है ऐसे? Well, there's a reason how it can be. उसका एक कारण है ये कैसे हुआ. Because even though Krishna looks like small boy, maybe this far around, but he is actually the complete whole of everything. भगवान कृष्ण जो हैं इतने छोटे छोटे कमर वाले इतने छोटे दिखते हैं पर वो जो है सर्व विभु सबसे बड़ा वही है. Sabse bara, yeah. Mother Yashoda experienced that when she looked in his mouth before. इसके पहले एक लीला हुआ जिधर भगवान के मुंह के अंदर देखी तब उनको मालूम पड़ा इसके बारे में. She looked in his mouth to see if he had been eating earth. मुंह के अंदर देखा मट्टी खा रहा है तुम. She saw in his mouth the universe. ये सारा संसार ब्रह्मांड देखा उसके मुंह के अंदर. Yes, so Krishna's not simply a small boy, he is God. वो ऐसे छोटा लड़का नहीं है, वो भगवान स्वयं है. So, yeah, this is why. Small boy, but so much rope, it's too short. छोटा लड़का, इतना रस्सी कम पड़ रहा है. And those 2 fingers, one of our acharyas, Sridhar Swami, he explains about these 2 fingers. ये 2 उंगली जो छोटे पड़ रहे हैं हर बार इसके बारे में श्रीधर स्वामी ने टीका लिखा है. One finger represents the effort of the devotee to serve Krishna. एक उंगली माता का जो प्रयत्न, भक्त का जो प्रयत्न है उसको संबोधित करता है. Second finger represents the mercy of the Lord. और दूसरा जो उंगली है भगवान का कृपा का संबोधन करता है. In reciprocation for the effort. जो कृपा भगवान का भक्त का जो प्रयास है उसके आदान प्रदान में भगवान जो कृपा देते हैं. And look at my fingers. See, look. Ek, do. See. This is the effort finger. This is the mercy finger.
तो ये दो उंगली में छोटा वाला उंगली जो है वो प्रयत्न भक्त का और बड़ा वाला उंगली भगवान का कृपा. So understand. It means, look, the mercy is more important. इसका मतलब है सदैव जितना हम प्रयास करते हैं उससे भगवान ज्यादा कृपा देते हैं. Yeah. The effort has to be there, but the mercy is more important. अवश्य हमें प्रयास करना चाहिए पर कृपा जो है वो बहुत मुख्य है. So anyway, again her anxiety just overflowed. तो माँ का जो चिंता था भगवान के भलाई के बारे में वो और भी बढ़ गया. And then overpowered Krishna again. और उसने दूसरा बार भगवान को बद्ध किया. And then she was able to tie him. और इसके कारण वो भगवान को बंधन में ला पाई. At that time, devotees, even if she only had that much rope, 1 centimeter, it would have been enough. उस समय में यदि मैया के हाथ में सिर्फ इतना ही रस्सी था तो भी भगवान को बांध सकती थी. Yes. So this is a very important point which we should understand about this whole Damodar Leela. इस लीला का सबसे मुख्य समझने वाली बात यही है. And about this whole month. और ये पूरा महीना इसी के बारे में होता है. You know, we celebrate different important occasions like Janmashtami. जन्माष्टमी जैसे अनेक उत्सव मनाते हैं हम. We celebrate Ram Navami. रामनवमी. And so many festivals, you know. अनेक उत्सव. Generally, we celebrate each one for one day. एक ही दिन के लिए मनाया जाता है. Yes, isn't it? This one, this Leela, we celebrate for 1 month. ये लीला जो है एक पूरा महीने के लिए मनाते हैं हम लोग. It means something. इसका बहुत बड़ा मतलब है. It means that we have to learn this lesson which is illustrated by Mother Yashoda. तो ये पूरा महीने मनाने का क्या मतलब है कि हमें यशोदा का जो भाव है, यशोदा ने जो सीखा वो हमें सीखना है. That if we want to get, you could say, the cooperation of Krishna, we have to develop love for him. यदि भगवान का कोऑपरेशन हम पाना चाहते हैं, सहायता या भगवान का सहयोग पाना चाहते हैं तो ये सीखना पड़ेगा. Yes, yes. So people who are practicing religion, generally they're praying to God for some material thing. धर्म पालन करते हैं सब लोग कुछ लौकिक चीज पाने के लिए. The Christians say, "Give us this day our daily bread." हमारे क्रिस्तु जो दोस्त भाई हैं वो प्रतिदिन मुझे रोटी दे दो भगवान से प्रार्थना करते हैं. हमको रोटी चाहिए. Give me my daily bread. Or as they say in Hinduism, या सनातन धर्म में बोलते हैं. Hinduism, में yeah, they say, give me a house and a car and a color TV on Jai Jagadisha Hare. मुझे एक घर, एक अच्छा कार और कलर टीवी दे दे, जय जगदीश हरे. Yes, you know that song, right? गाना तो सब लोग जानते हैं. That's the other verse. They didn't teach you that verse. It's the next verse. वो दूसरा एक श्लोक है, इधर नहीं सिखाते हैं वो. Yes, okay. So, yeah. But really to get Krishna to cooperate with what we want, it can only be done on the basis of love. यदि हम भगवान का सहयोग पाना चाहते हैं तो वो सिर्फ प्रेम के माध्यम से होगा. And then, even if you are not able to offer him something special, हम इतने छोटे हैं कि भगवान के लिए कुछ अच्छी चीज कुछ प्रदान नहीं कर सकते हैं तो भी. okay. Then, but still he'll be happy. पर भी भगवान हमसे खुश होंगे. You know, Vamsidas Babaji, who was a contemporary of Bhaktivinoda Thakur,
बंशीदास बाबा जी जो थे भक्ति विनोद ठाकुर के ही समय में जो थे, he would offer his deity sometimes uncooked brinjal. वो अपने मूर्तियों को बैंगन पका हुआ नहीं पका हुआ बैंगन देते थे. People generally, they don't eat uncooked baigan. कोई है जो बैंगन बिना पका हुआ खाता है? Baigan salad. बैंगन का सलाद बना के. Because I think it's because it doesn't taste very nice. उसको क्या स्वाद होता है? Yeah, like uncooked rice. जैसे चावल बिना पका हुआ. Generally, people don't eat uncooked rice. कोई है? Because it's not very nice. उसमें क्या स्वाद होगा? उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है उससे. But he would offer uncooked baigan. तो वे कभी-कभी भगवान को बैंगन बिना पका हुआ देते थे. And you know that story about Krishna visiting Vidura in Hastinapur? भगवान विदुर के घर जब गए थे हस्तिनापुर, वो तो कहानी आप जानते होंगे. I think you know that story. Anyway, it's a long story, but he went there for lunch. जब भगवान विदुर के घर गए थे भोजन के लिए, and they only had kela. और उनके घर में तो सिर्फ केला था. So they served Krishna just kela. तो उन्होंने सिर्फ भगवान को दिया अकेला केला. But they kela. That's like super kela. And they was in such ecstasy that they were peeling the kela and throwing away the fruit. तो इतने भाव में थे कि केला का छिलका निकाल के केला बाहर फेंक दिया और भगवान को छिलका दे दिया. And giving him the skin. हाँ, भगवान को छिलका दे दिया. And Krishna was so happy to be with his devotees, he was just eating the skin. भगवान इतने आनंद में थे भक्तों के साथ रहते हुए, उनको देखते थे वो भी छिलका खा लिया. He didn't notice. उन्होंने देखा भी नहीं. And he was telling them, this is the best kela I ever ate. तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे तो केला मैंने खाया ही नहीं. Now, don't offer Krishna the skin of kela. ये नया विधि घर में शुरू मत कर देना, भगवान को छिलका प्रदान करना. We generally don't eat that. वो साधारण तौर से खाते नहीं. And there's a reason why we don't. उसका एक कारण है. But Krishna was tasting the love. पर भगवान जो है प्रेम का स्वाद कर रहे थे. So from this Damodar Leela and the month of Damodar Kartik, we must try to learn this lesson. तो ये दामोदर महीना और भगवान का ये दामोदर लीला से ये एक सबक सीखना है हर एक को. Krishna is not easily impressed. भगवान को आसानी से हम प्रभावित नहीं कर सकते. Someone may offer him $1 million. $1 million यदि कोई दिया, and that's nice, it's good. अच्छा है भगवान को देना. But Krishna has billions and trillions and zillions, and your million, it's just like pocket change. ये $1 million जो बात कर रहे हैं वो भगवान के लिए तो चिल्लर है. Krishna, in that sense, Krishna does not see what you give, he sees what you do not give. उस तरह से भगवान वो देखते नहीं है जो तुम दे रहा है, पर वो देखते हैं जो तुम देता नहीं है, उसको बाकी जो रखा हुआ है. So let's try and learn this and try to work on developing this during the month of Kartik. तो हम सबको ये प्रयास करना है कि ये भाव जो है ये सीखे इस महीने में यशोदा मैया से. So yeah, Mother Yashoda is such a wonderful example like this. इतना सुंदर उदाहरण है मदर मैया यशोदा का. And let me just close by telling you one other little story.
एक और छोटा कहानी बोलते हुए मैं समाप्त करूंगा। It's Mother Yashoda and Krishna, they are together. यशोदा मैया और भगवान साथ में हैं And Krishna is being naughty. और भगवान सदैव जैसे हैं नटखट। And you know, children are naughty sometimes, और बच्चे भी शरारती होते हैं, particularly the little boys. और छोटे बच्चे लड़के। So Krishna's being naughty and Mother Yashoda is thinking, how can I stop him being naughty? तो भगवान तो शरारती है और मैया सोच रही है उसको कैसे रोक पाऊंगी। So she thought, I will make up some imaginary creature. तो मैं क्या करूंगी, एक नया जीव, एक स्पीसीज, एक प्राणी तैयार करूंगी। And I will frighten Krishna with this imaginary creature. और ऐसे प्राणी के साथ मैं भगवान को भयभीत करूंगी, काल्पनिक। Kalpanik. So she told Krishna, you better stop being naughty. तो उन्होंने बोला, हे कृष्ण, रोक दो ये शरारत। If you continue to be naughty, the howl will get you. यदि तुम ऐसे ही रहोगे, ये हाउ करके जो उनके काल्पनिक जो प्राणी है वो तुमको पकड़ेगा। Howl. And Krishna said, the what? ये क्या प्राणी? The howl? What's a howl? I never heard of a howl. ऐसे तो कुछ सुना ही नहीं प्राणी, मैंने बनाया नहीं। And That's okay. And Mother Yashoda said, oh yes, the howl. Oh, he's very big. ओ हाउ जो है वो बहुत बड़ा एक प्राणी है। And he has long teeth. तो यशोदा बोल रही है उसको बहुत बड़ा दांत है। And he loves eating naughty little boys. और ये बहुत शरारती लड़के जो है ना उसको खा जाते हैं। And Krishna was a little shocked. भगवान सुनकर डर गए। And Krishna was good. तो फिर थोड़ा शरारत कम हो गया। 15 minutes. 15 मिनट। And then he started being naughty again. वापस शरारत शुरू। And Mother Yashoda said, you remember what I told you. कृष्ण ये याद रखो मैंने जो तुमको बताया। You better be good. सुधर जाओ। Otherwise the howl will get you. ये हाउ जो है तेरे को खा जाएगा। He has long claws. उसके बहुत बड़े नाखून हैं। And 3 eyes. और 3 आँख हैं। And he loves eating naughty little boys. उसको तो छोटे बच्चे बहुत स्वादी होते हैं। So Krishna was very good. तो भगवान थोड़ा कुछ देर के लिए सुधर गए। बहुत अच्छा। 10 minutes. And then Krishna went outside. तो फिर भगवान बाहर गए। A couple of minutes later, Krishna came running back in. 2-3 मिनट बाद भगवान घर भागते हुए वापस आए। Mata, the howl is coming. हे माता, ये हाउ जो आपने बोला मेरे पीछा कर रहा है। And Mother Yashoda thought, what? The howl is coming? There is no howl. I just made up the howl. तो यशोदा मैया ने सोचा ये how did the how come? कैसा है? And she told Krishna, it's all right, don't panic. There is no howl. तो मैया ने बोला अभी सच बोला कभी फिक्र मत करो ऐसी कुछ चीज है ही नहीं हाउ कर। And Krishna said, no, the howl is coming. नहीं वो पीछा कर रहा है मेरा। He's just around the corner. कोने में है वो आ रहा है इधर। And Mother Yashoda felt very bad. यशोदा को बहुत बुरा लगा। I have frightened my poor little boy. मैंने इस बच्चे को ऐसे डराया अच्छा नहीं। Hari Bol. Oh, the howl is coming. बैल बज रहा है हाउ आ रहा है। And she told Krishna, listen, I just made up the howl. There is no howl. तो
तो उन्होंने बोला, हे कृष्ण सुनो, मैंने ऐसे काल्पनिक कुछ बता दिया, ऐसे कुछ है नहीं चीज। Suddenly, from around the corner came a howl. तो कोने से अचानक एक ये हाउ जो है सडनली आ गया। And Mother Yashoda thought, what is this? यशोदा भैया देख के डर गई। There were 3 howls. वो 3 हाउ आए हुए थे। Krishna turned them into stone. और भगवान ने उनको पत्थर बना दिया। And Mother Yashoda was bewildered. तो भैया तो ठीक से समझ नहीं पाए, भ्रमित हो गए। There is no howl. ये हाउ करके एक चीज है ही नहीं। I just made up the howl. मैंने कल्पनिक कुछ बनाया। And then there is a howl. तो अभी वो कल्पना जो है वो कल्पना नहीं वास्तविक बन गया। Kya ho raha hai? What's happening here? And then Krishna became very serious. तो भगवान बहुत सीरियस हो गए। बहुत serious. And Krishna said, if my mata says there's a howl, there's a howl. भगवान ने बोला, यदि मेरा माँ के वचन से हाउ करके एक शब्द एक जंतु है करके है तो अवश्य है। Whatever my mata says is right. जो भी माता बोलती है वो सच है। So all you children, you just remember that. इधर जो भी बच्चे हैं वो बात याद रखो। Okay, bacha, Lala, ठीक है? समझते? Okay, don't forget that. If you remember that, everything will be fine. वो भूल जाइए ना भूल जाइए, सब कुछ ठीक है। So anyway, like this, the relationship between Mother Yashoda and Krishna, it's very deep and very intimate and affectionate. तो ऐसे भगवान और यशोदा का बीच में जो रिश्ता है वो बहुत गहरा और बहुत समीप निकट रसमयी। And we have to try in this month of Damodar Kartik Mas, we have to remember to try to follow in the footsteps of Mother Yashoda. तो इस महीने के में हमें सदैव यशोदा का स्मरण रहना चाहिए और उनका जो पथ है उनका अनुयायी बनने का इच्छा है। Shri Yashoda Damodar ki Jai. Shri Yashoda Damodar ki Jai. Shri Yashoda Damodar ki Jai. Go Premanande. Hare Krishna. भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज की जय। तो महाराज हम सबको आज वृंदावन लेके गए हैं और हमको उधर जरूर जाके हाउ देखना है महाराज। हाउ महाराज? How? There's still one how there. Yeah, there's a place. एक जगह में एक हाउ है। How Bilal. हाउ पिलाओ। How Bilal Nandagram. नंदग्राम। Egg Howl, he's still there. You must be careful. आप सबको सावधान रहना है कि आप सबको पहला तो वृंदावन जाना है। अभी अनाउंसमेंट शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सावधान रहिए। पहला अनाउंसमेंट है कि हमारे ब्रज लीलानाथ प्रभु एक टूर लेके जा रहे हैं वृंदावन नाम। और जयपुर से शुरुआत होगा 21